हेलो डॉक्टर्स, वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। तो फाइनली आप लोग के सामने वीडियो आ गया है जिसको आप लोग बहुत दिन से इंतजार कर रहे थे। लाइक इमेज बेस्ड डिस्कशन। बहुत लोग का इस चीज़ से शिकायत था कि सर एसटीडी दीज थिंग्स आर रियली हेल्पफुल, बट काइंडली provide us all images in one platform. So already I have given you in PDF, like it's on my Telegram channel. Now in video form, like literally everything in detail by Dr. Vinayak Mehetre sir, a faculty of FMG from a faculty of FMG from AFMG coaching center. So finally he is like providing me, or providing, I can say, you, that all image based discussion. Not only it's image based discussion, also like important topics, what's the repeating topic and repeating images. So I think definitely you're going to benefit more than 50 to 80 questions from these videos. Yes, it's like little bit slow videos format, but you can extend it to 1x 1.5x 2x, as like जैसा आपको समझ में आता है वैसा आप करो and revise it properly. So that's why I have added this video before that discussion, that most of you are doing playing the video, but starting is like, obviously it's, you won't get anything in just 2 minutes. I know this nowadays it's happening that jaldi se jaldi kuch achieve kar lo. There is no shortcut for success. So थोड़ा सा वीडियो को देखो, आगे आपको चीज़ें बहुत क्लियर समझ में आएगा. और इमेजेस, ट्रस्ट मी, एक इम्यून बूस्टर की तरह होता है कि like out of 3 you will be getting 50 to 60 question correct from these images. So no only 100 or 110 required for from theory. कितना ये चीज़ बेनिफिशियरी है आप लोग के लिए, और टाइम कंज्यूमिंग नहीं है. यस, वीडियोस 2-2 घंटे के हैं, बट डजेंट मैटर कि आपको 2 घंटा पूरी देखनी. आप उसको 2x पे देख सकते हो, 1.5x पे देख सकते हो, जैसा अंडरस्टैंडिंग. जिस लोग को थोड़ा स्लो वीडियोस चाहिए उसके लिए 1x पे देखो. सो इट्स रियली हेल्पफुल गाइज. इसका अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाओ. और जैसे भी हो, the main motto, our motto, your motto, and like tutor like Dr. Vinayak Mehetre sir, everyone want that clear it in December itself. Don't like अब इस चीज को लटका फंसा के मत रखो. किसी को नहीं जानता फ्यूचर क्या होगा, किसी को नहीं जानता आगे आपके लाइफ में क्या होगा, किसके लाइफ में क्या होगा. सो जितना ज़्यादा रिसोर्सेज है आपके पास, उससे यूटिलाइज करके और आगे बढ़ो. एंड रिसोर्सेज, खुशखबरी, गुड न्यूज़ है कि मैंने एक प्लेटफॉर्म पे सारे इमेजेस जो इम्पोर्टेंट है, लाइक ऑप्था, ENT, रेडियो और माइक्रो, पैथो, वट एवर इंपॉर्टेंट थिंग्स, नॉट ओनली इमेजेस के रिलेटेड से जो क्वेश्चंस बनते हैं. सी क्वेश्चन दो तरह का होता है, एक डायरेक्ट इमेज बेस से, एक डायरेक्ट इमेज बेस से क्वेश्चन आता है, और एक होता है कि उसको थोड़ा घुमा के आते हैं विथ कनेक्टेड विथ थ्योरी. तो हर एग्जाम में मिनिमम 30, मैक्सिमम 70 to 80 क्वेश्चन तो इमेज से रिलेटेड होते ही है. तो उसको क्यों मिस करना. और द बेस्ट पार्ट इज इमेज का क्वेश्चन गलत नहीं होता. सो गाइज, जैसा भी आपको हो सके, जैसे भी टाइम मिले, इस चीज़ को यूटिलाइज करो एंड इट्स हैप्पी, बी हैप्पी. लाइक फाइनली यू गेटिंग दिस थिंग्स ऑन आवर माई प्लेटफॉर्म itself in detail, or in one, what to say, in one like playlist. So guys, work hard, very less days remaining. Watch this video. Start the session right without wasting your time. Okay, it will be little bit longer. Reason being, it is Optha. Okay, Optha you can correct all of the questions. Okay, 15 out of 15. So let me take in that way, right? So you can get the maximum question from the session. Over here, I am going to give you hints how to diagnose a case. Okay, how to diagnose a case. Okay, these are punchlines, and believe me, this exact punchline is going to come in the exam. Okay, बाकी थोड़ा इधर उधर का पढ़ना है तुम्हें, ऑफ कोर्स. ओके, वन लाइनर्स है ना. I will make it of the easy. After that you will be able to understand your notes. Okay, ultimately notes ही पढ़ने, but this will be helpful to you, right? So let's study आंख, है ना, किसकी, ऑफ्ता की. You have seen this image. Okay, इसमें से कुछ आता नहीं, स्टिल स्टार्ट करना है थोड़ा तो बताना पड़ेगा, राइट?
Okay, which is the vestigial organ in our body, in our eye? Vestigial organ कौन सा होता है? Anyone? It is plica semilunaris. It is a vestigial organ. Okay, no use. Okay, we don't have any use of this. Yes, correct. Okay, now tell me, in eye, from the canthus, which is upward and which is downward? कौन सा नीचे के साइड होता है? If you can take a look, right? So our eye is not straight. Okay, ये straight नहीं होती. Medial canthus is downward, but lateral canthus is upward. Okay, थोड़ा सा ऊपर होता है, right? थोड़ा सा ऊपर होता है. Then we have two muscles. One muscle is called as sphincter pupillae. Okay, sphincter pupillae. Another one is dilator pupillae, right? Dilator pupillae. Sphincter मतलब क्या होगा? गोल होना. Okay, such round muscles are present in the eye is called as sphincter pupillae, right? So what will be the function of this? It is a sphincter, right? गोल है. So they will contract the eye. Eye को क्या करेंगे? Contract करेंगे, right? That is called as meiosis, right? And one is dilator pupillae. This straight muscles, okay, this straight muscle is called as dilator pupillae. What will be the function of sphincter pupillae? Meiosis. So what will be the function of dilator pupillae? Dialysis, right? Dialysis उसका मतलब होता है आँख को बड़ा करना साइज में, right? So mydriasis. D stand for dilation, right? Now tell me, in which poisoning the constriction of eye happens? उसका मतलब होता है meiosis बढ़ गया. What do you think? Yes or yes? OP poisoning, organophosphate poisoning, एक ही नहीं है लेकिन. What do you think? है ना, क्वेश्चन आता है एफएमटी से, ये लिखा होता है बट वी गेट कंफ्यूज कि ये क्या था. बहुत जगह पड़ा होता है. और which drug causes it? कौन सा ड्रग कॉज करेगा? एएनएस. एएनएस में पढ़ाते हैं क्लोनिडीन, right? And carbolic acid. Now mydriasis happen due to what? Which poisoning? Dilatation. एट्रोपिन का साइड इफेक्ट है. ओके, एट्रोपिन का साइड इफेक्ट है. Then this is the examiner's favorite question. बहुत बार पूछा गया है. Lens is developed from. Yes, the answer is surface ectoderm. Correct. The answer is surface ectoderm. Now tell me, what are other parts of eye walls developed from surface ectoderm? Anyone? After is easy. You will take it easy. Yes.
neuroectoderm, okay. Surface ectoderm, yes, all the glands, okay. Epithelium of conjunctiva and cornea, so does the lens, all the glands, yes, correct. That will be developed from surface ectoderm. Neuroectoderm से develop होता है vitreous optic nerve, iris muscle and retina. Now question will be tricky when it is going to come about vitreous, okay. Vitreous develop from all the layers, okay. Vitreous develop from all the layers, but remember, if you have to choose a single best answer, not all of the above, okay. If you have to choose single best answer, not all of the above, then the answer will be neuroectoderm, okay. Neuroectoderm कब है? जब सिंगल बेस्ट आंसर तुम्हें चूज करना है, अदरवाइज नहीं है उसका, ठीक है. ऑल ऑफ द अबव विल बी द आंसर. रीजन, उसका थोड़ा थोड़ा पार्ट इज गोइंग टू डेवलप फ्रॉम ऑल द लेयर्स, ओके. थोड़ा सा एनएट का रिवीजन करवा दिया. नाउ वी कम टू द मेन पार्ट. व्हाट डू थिंक व्हाट दिस लेडी हैज? इसका इमेज आएगा डायरेक्ट, इसमें कोई हिंट नहीं है. हिंट है बट इट्स ऑन इमेजेस, एंड आफ्टर विदाउट इमेजेस studying is a crime. Take a look. In this eye there is a different color, in this eye there is a different color, It right? is heterochromia, So sir. what is this? Please mute your mics. What do you think? There is one color in eye and second color in eye, okay. These are not normal eyes, so it is called as heterochromia. Iridium, okay. What is it? Heterochromia iridium, okay. But now if you can appreciate, in one eye there are two colors, okay. There are different color in one eye, so it is called as heterochromia. दोनों में बोला जाता है, लेकिन उसके आगे की टर्म will change in only two alphabets, okay. This is called as heterochromia iridis. क्या बोलेंगे हम इसे? dis and dm, and इसीलिए ये क्वेश्चन आता है, right? Different color in two eyes, both the eyes, dm. In one eye it is iridis, dis, right? So remember this, okay. Remember this. Now I will give you one question and try to answer, okay. Old age guy coming with decrease in vision slowly, he had a decrease in vision so slowly. On examination, this type of eye is present, which is given in the image, and he is around 60 years of age and decrease in the vision. बस इतना ही हिंट है. इसमें एक हिंट था ओल्ड एज, okay. First hint was old age, slowly decrease in the vision. Cataract take time to develop, okay. What I'm saying, cataract takes time to develop, in short. बुढ़ा बोला था, that's it. If you remember, the cataract, right, the first line which is written in your all of your notes is most common type of cataract is, है ना. याद नहीं रहती ये लाइन क्योंकि ये इजी सबसे.
इट इज सिनाइल। सिनाइल का मतलब होता है बुढ़ापे में आने वाला कैटरैक्ट, राइट, ओल्ड एज कैटरैक्ट। एंड दिस इमेज इज ऑफ विच कैटरैक्ट, एनीवन? उसमें भी टाइप्स है ना, टेक अ लुक ओवर हियर, व्हाइटिश, राइट, व्हाइटिश and grayish. What I'm saying, whitish discoloration and grayish discoloration, right? और cornea look hazy. cornea कैसे दिख रहा है? Hazy. Yes, it is correct. Okay, whitish और grayish discoloration of cornea, sorry, of lens is called as immature cataract. And this was your exam question. Okay, immature cataract बोलते हैं इसे। कैसे आ गया समझ में? व्हाइटिश डिस्कलरेशन है, ग्रेइश डिस्कलरेशन है, immature cataract. Then come, it look like a marble. मार्बल जैसा दिख रहा है, पूरा व्हाइट, राइट? अगेन ओल्ड एज, slowly decrease in the vision, and now patient is presenting with whitish like eye. पूरा eye कैसे दिख रहा है? ऐसा लग रहा है अंदर पत्थर रखा है किसी ने. This is called as mature cataract. Okay, mature cataract. ये हो गए दो टाइप. This is called as bag of milk appearance. क्या बोलते हैं हम इसे? This is called as, yes, bag of milk appearance. अपने one liner रटा होता है, लेकिन this is how it look. Okay, bag of milk with brownish discoloration. Okay, अब ये बोलोगे सर इसमें भी black and white है, but this is not fully white and brownish. Over here there will be slightly discoloration starting. ये starting phase है. Okay, but over here what has happened? Pupil दिख रहा है? No, we are seeing a fully developed cataract, है ना? Whitish and brownish discoloration. इसको क्या बोलेंगे हम? This is called as Morganian cataract. This is called as Morganian cataract. And the last, okay, cataract में का पानी सूख गया. कैसे समझना है? कैटरैक्ट में का पानी सूख गया, the water is gone. Now क्या होगा? It will become more harder and there will be stripes, है ना? कुछ हम रखते हैं उसको पानी सूखने के बाद वो ड्राई हो जाता है, राइट? It is same. This is called as sclerotic cataract. This is called as sclerotic cataract, right? समझ आए? This was senile cataract और morphological variants of cataract. हम आते फिर, sorry, this is the cataract which we see in day to day life. But अब क्या है? There are diseases which can cause special cataracts. क्या करेंगे वो? Special cataracts बनाएंगे. All of you came from the countries from where you have seen snow, right? It looks like there are drops of snow in the lens. Okay, there are flakes of snow. इसी को हम बोलते हैं स्नो फ्लेक कैटरैक्ट. क्या बोलेंगे हम इसे? स्नो फ्लेक कैटरैक्ट. Yes, it is seen in
diabetes mellitus, right? Now, normally in our lens, what happens? The patient who don't have diabetes, what happens? Normally, glucose get metabolized. Glucose get metabolized by using an enzyme that is called as hexokinase. पूरी cycle तो नहीं बताऊंगा, but just remember this. It get metabolized by using enzyme called as hexokinase. But what happens in diabetes? There is abundance of glucose, right? Glucose बहुत सारा है उसमें, right? Diabetes है. So hexokinase तो उतना नहीं है ना. Glucose is produced because there is a disease, but hexokinase is limited in the lens. So what will happen? This glucose will use another enzyme. The name of that enzyme is aldose reductase. क्या नाम है? Aldose reductase. Okay. This glucose now will get converted, not getting metabolized. Reason, there is abundance of glucose. By it will get converted into sorbitol. Okay, sorbitol. Yes, correct. Now tell me, there are some questions. This is your recent question also. Which enzyme deficiency is present in snowflake cataract? Try to tell. Which enzyme deficiency is present? Anyone? सामने है तुम्हारे. The enzyme which is going to finish due to abundance of glucose. Hexokinase, right? Hexokinase will be deficient. Which enzyme is responsible for snowflake cataract? Aldose reductase. Yes, aldose reductase. What is getting deposited? Yes, so these are the some one-liners which has been asked. Remember, if sorbitol is not in the option, what I'm saying, if sorbitol is not in the option, the answer is fructose. Then the answer will be fructose, right? Now, metabolism कैसा होता है लेंस में? It happens due to anaerobic glycolysis, Krebs cycle, HMP shunt. And last में देखो, why sorbitol is getting deposited? The reason is sorbitol pathway also. These are the 4 cycles which will be used for metabolism. In diabetes, this pathway will dominate. This pathway will dominate. That's why you will see deposition of sorbitol. Deposition of sorbitol. Biochemistry interconnected. It's look like there is a drop of oil, right? Drop of oil. This is called as what? Oil drop cataract, right? It is seen in galactosemia, right? It is seen in galactosemia, correct. Now, what is happening in normal people? Same. Rule is same. Galactose will get metabolized by using hexokinase. But in galactosemia, this galactose, again, aldose reductase, same. The deposition will be galactylol. Question can be tricked again. Which substance deposit in the lens? The answer is galactylol, not galactose. Okay,
गैलेक्टोसीमिया सबको लगेगा गैलेक्टोज डिपोजिशन हो रहा है, नो इट इज गैलेक्टिलॉल। ओके, लॉल, ये तुम्हें याद रखना पड़ेगा, ठीक है। इजीएस्ट टॉपिक, श्योर शॉर्ट क्वेश्चंस ऑन कैटरैक्ट, एक क्वेश्चन आना पक्का होता है हर बार। है ना, क्वेश्चन इज जस्ट ट्रिक्ड a little bit, language is strict. Chalcosis means deposition of copper, right? And chalcosis is seen in which disease? Wilson disease, right? It is seen in Wilson disease. So answer is C, right? Answer is C. And the name of the cataract is sunflower cataract. Okay. Sunflower के अंदर ये होता है बीज, right? We have beans inside, right? बीज होते हैं, एक्चुअली इसी को बोलते हैं। ओके, द सेम थिंग वी विल सी। ये तुम्हारा फूल हो गया, एंड हियर आर द बीज which will be in different color, right? This is called as sunflower cataract. Sunflower cataract, right? Seen in, yes, of course, Wilson disease. Name of this ring आ चुका है बहुत बार, yes, KF ring, Kaiser Fresner's ring, right? Now this is also called as, remember, this is also called as pseudo cataract. क्या बोलेंगे हम इसे? झूठा है। Okay, which gene is defective in Wilson? Yes, there are two genes. Okay, ATPase 7A and ATPase 7B, right? There are two. Remember, M first, इसी को हम उल्टा करेंगे, that is W, right? M को उल्टा करेंगे W. Menkes disease 7A, 7B Wilson disease, right? 7A Menkes, अपोजिट, M को उल्टा गया W, 7B, कंफ्यूजन होता है। Patient presented with decrease in vision, and on ophthalmoscope or otoscope we are seeing polychromatic, क्या बोलते हैं, पॉलीक्रोमेटिक। पॉली का मतलब होता है डिफरेंट डिफरेंट, क्रोमेटिक का मतलब होता है कलर, लशर्स, लाइटिंग, है ना, लशर्स। अलग अलग कलर दिख रहा है, देखो, this is called as polychromatic luscious. Okay, नाम क्या है? Yes, the नाम is क्रिसमस ट्री कैटरैक्ट। क्रिसमस ट्री ऐसे होता है, but this is not the cataract. Actually, the ones which we attach, this will be of different different colors, right? Same यहीं पे वही दिखेंगे. That's why the name given is Christmas tree cataract. Yes, seen in, correct.
मायोटोनिका डिस्ट्रोफिका, मायोटोनिका डिस्ट्रोफिका नाम लिखे हुए हैं. I will give you one mnemonic if you want it. Sun will, sunflower, seen in Wilson, right? Glow on, galactosemia, oil drop, right? Christmas, melting. Christmas, Mytonica. Snow in Delhi. Snowflower cataract seen in snowflake cataract seen in diabetes. Okay. बाकी हार्ड वर्क करना तो पड़ेगा. Now tell me, what are the surgeries which we do use for cataract? कौन से होते हैं? नाम तो पता होंगे. Patient is operated for cataract surgery. Now he is having such image. इसको क्या बोलते हैं? It look like a black. It look like a black. इसी को बोलते हैं jet black pupil. Okay, उसी का नाम है jet black pupil को ही बोलते हैं हम अफाकिया. अब बता दो कौन सी सर्जरी है? It is ICCE, intracapsular cataract excision, right? What we are going to do? Intracapsular, right? Lens plus capsule will be removed. क्या करेंगे इसमें? हम दोनों निकालेंगे, right? Now tell me, which lens is used in ICCE? Anyone? Anterior chamber intraocular lens is used. Okay, anterior chamber intraocular lens is used, right? ठीक है. ICCE, when we are going to do ICCE used? कोई तो रीजन होगा ना इसका. No, lens is subluxated when it is more than 180 degrees. Okay, reason? Due to ciliary damage. तुम्हें क्या याद रखना है इसमें? What is done? What is done? Jet black pupil. That is ICC. ये तो याद रख लो, ये आया हुआ है, right? This has been asked. Then we come to extra capsular cataract excision. The meaning itself speak what is we are going to do. We are not going to, capsule is not removed. What is removed? Only lens. Okay, only lens will be removed, right? So which lens is used over here? डायग्राम चाहिए. ऐसे लेंस होती है, राइट? वी हैव लेंस लाइक दिस.
but now we are going to have something like this, right? ऐसे आंख होंगी आगे से. So over here we are going to put a lens. कैप्सूल वहीं पर रहेंगी लेंस की. Yes. Posterior chamber intraocular lens. Okay, PCIOL. What we are going to see? We are not going to see fully jet black pupil, but there will be blackish pupil. इसी को हम बोलेंगे झोटा, pseudoaphakia is seen. Okay, pseudoaphakia is seen. Okay, small incision cataract surgery. What they are going to ask, that is the length, 5 to 7 mm. 5 to 7 mm. ये पूछा जा चुका है. Phacoemulsification. What we are going to do over here? By using one knife. Okay, by using one knife which has a sharp edge, which has a sharp edge. ये वाला यहाँ पे sharp edge होगा. We are going to cut this cataract slowly, okay, from one side, and from other side, ये जो hole दिख रहा है, that cataract will be taken out. It is like vacuum है, तो उसे वो खींच लेगा जो जो ये कट कर रहा है, right? That is called as phacoemulsification. Phacoemulsification, right? Incision. What is the incision? The size of incision is 3.2 mm. 3.2 mm, right? कौन सी लेंस यूज करते हैं यहाँ पे? लेस देन, यस, 3.2, 3.3. अब कोई बुक अलग भी बोल सकता है. Which lens is used over here? Foldable. Intraocular lens. Yes, foldable intraocular lens. Reason being, the size of incision will be very small, so we have to fold the lens और उसके बाद उसको आंख में खोलना है, तो foldable होंगी, right? Correct answer, that is silicone or acryl. Silicone or acryl, right? Do we need to give suturing over here? Do we need to give suturing over here? Anyone? Yes, no suturing. Reason, it is self-sealing. Self-sealing. Now try to tell me which is this lens. आ चुका है. Take a look over here. S shape, right? There is a S shaped part present on the lens. Now take a look over here. Okay, some of the part will not be seen. Reason being, इसके पीछे चला गया वो, right? So तुम्हें क्या देखना है? ऐसा कुछ वायर तो नहीं है लेंस में. Okay, लेंस का ही पार्ट है that is going to be going towards the edges of the eye, right? The name of this lens is called as, यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिखेगा clearly. Take a look over here. This is called as कौन सी lens? Correct answer, Kelman. The name of the lens is Kelman. That is anterior chamber intraocular lens, right? How to differentiate this lens from the posterior chamber intraocular lens?
Take a look over here. It's look like there is a wire. There is a wire, right? Wire जैसा दिख रहा है. ये लग रहा था कि ये लेंस से ही पार्ट निकला हुआ है, राइट? और यहाँ पे लग रहा है वायर इज अटैच्ड, राइट? सो टेक अ लुक. लेंस विथ वायर इज अटैच्ड, है ना? लेंस विथ वायर इज अटैच्ड. तो इसको क्या बोलेंगे हम? सी शेप्ड posterior chamber intraocular lens. C-shaped posterior chamber intraocular lens, right? So, what is the name of this lens? Tray जैसा दिख रहा है? It look like a tray or plate. इसी को बोलते हैं plate design. Plate design, right? And this one, it's look like there are so many round circles, right? इसी को बोलते हैं multifocal. क्या बोलेंगे हम इसे? Multifocal near vision lens. Okay, it is used for near vision lens, correct? Okay, it is used for near vision. ठीक है? What is the answer for this question? See, when you don't know the answer, okay, when you don't know the answer, just remember it like this. Okay, एग्जाम में 3 days या फिर less days में, okay, 3 to 4 days, 5 days, right? Every time एक surgery हुई है, what can happen after surgery? There is going to be sepsis, right? There can be chances of infection, right? There are chances of infection. Same thing is going to happen over here also. There are chances of infection, and the infection which can happen after cataract surgery, the answer always endophthalmitis, right? Endophthalmitis. So क्या क्या होगा? Infection है, so they will have pain, decrease in vision, right? Initial improvement हुई थी, reason being we have operated the patient, so उसका vision वापस आया था, but now again the vision is going down. So answer is endophthalmitis, right? Take a look over it. Cornea is not so clear, उसी को बोलते हैं hazy cornea. What we will call it? Hazy cornea. And take a look over here. Pus in anterior chamber, that is called as hypopyon. सुना होगा hypopyon. So pain, decrease in vision after having good vision, and patient is presenting within some days of surgery. Always the answer is going to stay endophthalmitis. Okay, now tell me, what are the causes of endophthalmitis? एक तो बता दो. इन्फेक्शन होता है बॉडी में तो सबसे पहले कौन आता है? द फेवरेट ऑर्गेनिज्म ऑफ ऑल. यस, फेवरेट ऑर्गेनिज्म कौन है? स्टैप. सो ओवर हियर आल्सो the early organism which can cause endophthalmitis will be, yes, that is staph. Most common organism is not Staph aureus, mind it, it is Staph epidermidis. Staph epidermidis. Okay, now question is going to come like this, that all of the following causes endophthalmitis except. Now the problem is that everybody is going to forget this. This is your acne which is present on your cheeks,
Okay. P. acne, propioninium acne can also cause endophthalmitis. Okay. सबको लगेगा कि ये नहीं कर सकता, but it can also cause. So do not forget P. acne. Okay. This is the late cause. What is the treatment? Important part. इन्फेक्शन हुआ है आई का, इन्फेक्शन में हम क्या देते हैं? एंटीबायोटिक्स, राइट? सो आंसर इज एंटीबायोटिक, बट रिमेंबर दिस इज इंट्रा विट्रियल antibiotic. Okay, intravitreal antibiotic, there is no role of systemic antibiotic. Okay, गोलियों से इसका काम नहीं होगा. We have to give intravitreal injections, right? यहाँ का इन्फेक्शन है, so we need to give it over here. ठीक है. Then the second complication which is going to be asked is this one. Khatam. If it is a very late complication, remember now what has happened. We have removed lens with cataract, but there is going to be deposition again. वहां पर और एक कैटरैक्ट फॉर्म होने की कोशिश कर रहा है. द आंसर इज आफ्टर कैटरैक्ट. ओके, आफ्टर कैटरैक्ट मैंने लिखा है क्योंकि यही आएगा ऑप्शन में, बट द मेन नेम इज, इसी को हम क्या बोलते हैं? सेकेंडरी कैटरैक्ट, राइट? और क्या बोलते हैं? यस, पोस्टीरियर कैप्सुलर ओपेसिफिकेशन, right? Posterior capsular opacification. How it is going to look? The dirtiest eye, है ना? जो समझ नहीं आ रहा वो posterior capsular opacification होता है. Take a look over here. This is the kind of whitish deposition will be seen. Okay, will be seen. This is called as posterior capsular opacification, and name of this ring is, anyone? Sommering ring. क्या बोलेगा हमसे? Sommering ring, है ना? जब अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को पैसे दे, मोती नहीं दे सकते, एटलीस्ट यू कैन गिव दिस, है ना? आंखों में मोती दे देना उसके. इसी को बोलते हैं हम इश्निक pearls. Okay, Ishnick's pearls. Yes, correct. What will be the treatment? आंसर डिसीज में ही है. ओपेसिफिकेशन कहां पर है? It is in the posterior capsule, right? So what we will do? Remove the capsule. Yes, posterior capsulotomy. By using what? By using, when you don't know the answer about any kind of laser, the answer is always going to stay ND-YAG laser. ND-YAG laser. ठीक है, आंसर क्वेश्चन में ही था, समझना जरूरी था. पढ़ा सबने, लॉजिक नहीं लगाया. Child presented with decrease in vision and there is bluish discoloration of eye
On ophthalmoscopy, we are seeing some dots. Now you will ask, sir, it look like a snowflake cataract. Snowflake cataract किसमें होता है? भूल गए अभी के अभी? Diabetes. So they will mention diabetes, right? When they are asking about blue dot cataract, they will mention what? Child. Blue dot cataract, right? Most common associated with which syndrome? So they can add the clinical feature of this syndrome as well. Yes, when you don't know the answer from the syndrome, the answer always is going to stay. Down syndrome. तुक्का मारना है तो डाउन सिंड्रोम में मारना regarding every subject, right? Regarding every subject. What do we see more in Down syndrome? It look like a brush, right? धागे धागे निकल रहे. This is called as brush field borders. क्या बोलेंगे हम इसे? Yes, correct. This is called as brush field border, right? And there will be hypoplasia of what? Iris hypoplasia. Iris hypoplasia, brush field border, and blue dot cataract is commonly seen in Down syndrome, right? Blue dot cataract का क्वेश्चन कैसा आएगा? Child, snowflake cataract, diabetes, or adult will be mentioned, correct? Rider's cataract is seen in no one. Single liner है यार. Do not take time. The answer is zonular cataract, right? Whenever they are going to ask about rider's cataract or zonular or lamellar cataract, they will mention like someone is horse riding, right? Or a delivery boy is presented with decrease in vision. On ophthalmoscopy, you are seeing images like this, right? थोड़ा इंग्लिश भारी करते है ना, इम्प्रेस उसी से होंगे तो इंग्लिश आनी चाहिए. देयर इज लीनियर. लीनियर का मतलब होता है स्ट्रेट लाइन. There is linear opacity at the equator. There is linear opacity at the equator, पृथ्वी के एंड पे, राइट? ऐसे opacities होंगी. हाउ? लीनियर. is called as which cataract? Zonular or lamellar cataract. इसी को बोलते हैं, राइट? Causes, first one is riders. और किसमें किसमें होता है? This is congenital cataract as well. Okay, but blue dot cataract is not congenital cataract. This cataract can also be congenital. Yes, rubella. Or it can be autosomal dominant. Yes,
maternal deficiency of vitamin D. You can remember by the mnemonic RAM or RAM. Okay, these are the causes. So पूछा जा चुका है और आएगा, सब आएगा कैटरैक्ट में से. The answer over here is रेटिनोब्लास्टोमा, राइट. रेटिनोब्लास्टोमा की फेवरेट क्वेश्चन है विच जीन. रेटिनोब्लास्टोमा 1 जीन. Okay, RB1 gene. Yes, leukocoria. Now what are the other causes of leukocoria? Leukocoria का जब भी क्वेश्चन आ रहा है, you have to look at the question, not at the image. और एक क्वेश्चन है ऐसे, वो मैं बताऊंगा आगे. You have to look at the question, not at the image. Cataract itself can cause leukocoria, retinoblastoma, toxocariasis, right? Retinal detachment, coloboma. At least थोड़े बहुत तो याद होने चाहिए. There are so many causes of leukocoria. ठीक है, once in a while comes, थोड़ा बहुत पढ़ लेना, ज्यादा इसमें याद रखने की जरूरत नहीं है. Patient presented with membrane on the conjunctiva. Patient presented with the membrane on the conjunctiva, and when ophthalmologist try to peel it, when ophthalmologist trying to peel it, it does not peel easily. What will be the cause of this conjunctivitis? एक ही हिंट है वो जो पकड़नी पेपर में, मैंने वही बताई है. Does not peel easily. Answer is, पहले कौन से कंजंक्टिवाइटिस है? दिस इज membranous conjunctivitis, right? Yes. Does not peel easily, right? आजकल के रिलेशनशिप होते हैं, right? When you have cash, they does not go easily, right? So they will not peel easily when you have cash. Corynebacterium diphtheria, adenovirus, correct. और S stand for strep hemolyticus. क्या पकड़ना है एग्जाम में? Does not peel easily, or there is pain while peeling the membrane, right? membrane कैसे दिखेंगे? ऐसे दिख रहा है, whitish part आया है ऊपर. Over here also there is membrane on the conjunctiva. आ गया समझ? conjunctivitis with laceration or maceration of lateral canthus. Conjunctivitis with maceration or laceration of lateral canthus is called as, ये क्या है? Angle is called as angular conjunctivitis. इसी को हम बोलते हैं angular conjunctivitis. The answer is moraxella. आगे क्या है? There are two moraxella, right? Yes, it is Axenfeld.
Moraxella action failed, right? Treatment 1% tetracycline, 1% tetracycline and और क्या दे सकते हैं हम? जिंक ऑक्साइड. ओके, आ गया ना समझ में? Why we are calling it angular conjunctivitis? It is going to involve the angle of the eye. That's why we call it angular conjunctivitis. क्या है ये? गाना बनाया यार इस पे. लाल ऐसे होता है, ये लाल नहीं है. दिस इज कॉल्ड एज गुलाबी आंखें जो तेरी देखी. रेड कलर ऐसे होता है, देखो ये मैच नहीं हो रहा है. राइट, गुलाबी आंखें जो तेरी देखी तो मुझे कंजंक्टिवाइटिस हो गया. द आंसर इज पिंक आई. इसी को बोलते हैं मद्रास आई. ओके, इसी को बोलते हैं इपिडेमिक केराटो conjunctivitis. Right? Yes. Caused by adenovirus. Right? Question में क्या आएगा? There will be epidemic of this eyes. Right? Epidemic of this eyes. एरिया में सबको होगा, एक को नहीं होगा, सबको होगा. Reason is this is epidemic, right? Yes, adenovirus, but which adenovirus? No one. यही तो कयामत है. फिर इसके आगे का ही हम भूल जाते हैं. 8, 1937. I used to remember it like this: 8 plus 19. 8 plus 19, 27. 27 plus 10, 37. So I used to remember 27. Okay, something is better than nothing. 8 plus 19, 27. 27 plus 10, 37. ठीक है, आना चाहिए. If you will bowl a ball by pace, right? If you will bowl a ball by space and it hit on the eye, how your eye will turn out? Red, right? Red. Bleeding will be there, right? So this is called as hemorrhagic conjunctivitis, है ना? Hemorrhagic conjunctivitis. आंसर क्या है यहाँ पर बताओ? Yes, the answer is Coxsackie, correct. Picorna, adeno, Coxsackie, entero, and trauma, right? Trauma. These are the causes of acute hemorrhagic conjunctivitis. नाम में लिखा है hemorrhage, right? So there will be trauma to the eye. So even trauma also going to cause the conjunctivitis. The name of that conjunctivitis is acute hemorrhagic conjunctivitis. कैसे याद रखना? बॉल मारोगे पेस से, there will be bleeding.
राइट, न्यूमोनिक इज दिस वन, ठीक है। और वो जहीर खान क्यों है वो मत पूछना, आई एम अ लेफ्टी। Look like there are some follicles. This is present in your favorite disease, कौन सा? Follicular conjunctivitis. Okay, it is seen in COVID-19. ठीक है, it is seen in COVID-19. ट्रोकोमा और इजिप्शियन ऑफ्थेल्मिया कौन कॉज करता है? बता दो, एक वन लाइन एक न्यूमोनिक दूंगा उसमें तुम्हारा ट्रोकोमा खत्म है। पॉजिटिव एजेंट, यस, कालामीडिया है ना, क्लेमिडिया, नॉट कालामीडिया, दिस इज क्लेमिडिया, राइट। यू कैन, क्या क्या होता है इसमें, विच स्ट्रेटजी वी यूज सेफ स्ट्रेटजी, राइट। विच टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी, which ulceration is seen, it is the only complication of trachoma, that is corneal ulceration. Which pits are seen, Herbert's pits, gadde pits, right. Arts line, right. और क्या मिलता है, which follicles are seen, anyone? साबूदाना, sago grain follicle. The mnemonic is safe for chaps, safe for chaps. वन बाय वन देखेंगे। scarring, scarring, scarring present on upper eyelid, upper eyelid पे ही मिलेंगी। what we are going to see, scarring, white line, इसी को बोलते हैं scarring at upper tarsal conjunctiva, क्या बोलेंगे हम इसे, आर्ट्स लाइन, ओके, आर्ट्स लाइन बोलते हैं इसे, यस करेक्ट। पिट्स, गड्ढे, दिख रहे गड्ढे जैसा, पिट्स, ये देखो गड्ढा ऐसे होता है, सेम वी आर गोइंग टू सी ओवर हियर, दिस इज कॉल्ड एज हर्बेट पिट्स। ये गड्ढे है, but when you are going to get a question, they are not going to write down Herbert Pitts directly. क्या लिखेंगे वो, healed scarred follicle, okay, healed scarred follicle। ये तुम्हें हिंट पकड़नी है पेपर के अंदर, okay, go and look at the question, ये लिखा हुआ होता है, or else okay, ये लिखा होगा आएगा, जाके देख लो। then comes साबूदाना,
that is called as sago grain. इसी को बोलते हैं हम sago grain follicle, राइट, sago grain follicles, ठीक है, साबुदाने जैसे दिख रहे हैं, इसको उसलिए उसका नाम रखा है sago grain follicles, nothing else, ठीक है, sago grain follicle. Now tell me WHO classification का नाम क्या है? And I will tell you hint to how to identify the classification. What is the name of that? Anyone? That is Fisto. क्या है? Fisto, correct. Fisto. Now comes the classification. TF. T stand for trachoma, F stand for follicles. So whenever you are seeing in the definition, follicles are written. Okay, in the question, follicles are written. That means this is from TF class. Okay, TF class. Okay, TI. TI. I stand for intense. Okay, so what is going to happen over here? Inflammation is going to increase. Pronounced inflammatory thickening. Right? क्या हो रहा है इसमें? Inflammation is going to increase. TS. Trachoma scarring. Scarring कहाँ लिखी थी हमने? Arts line में, right? There will be scar present on the upper tarsal conjunctiva. So क्या मिल रहा है इसके अंदर? Scarring. What you are going to get over here? Arts line. Right? T. Trachoma. Trichiasis. Trichiasis means what? Misdirected cilia. So what we are going to get over here? Right? Extra line of eyelashes. Right? CO. O stand for C stand for cornea. O stand for opacity. मैंने अभी बोला था. The corneal opacity is the only complication which we see in trachoma. So last में क्या मिलेगा? Of course we are going to see complication. The name of that complication is corneal opacity. ठीक है? This has been asked. This has been asked. आना चाहिए. Meaning itself speak the word. Which strategy we use? We use safe strategy to treat. Right? Safe strategy से हम treatment कर दे. Yes. S stand for what? Surgery. अब surgery किस लिए करेंगे? Not to remove trachoma, to remove that trichiasis, right? Misdirected cilia. A stand for antibiotic, right? Antibiotic. Safe strategy में कौन सी antibiotic use होती है? Which oral antibiotic is used? Yes, azithromycin. Do not confuse yourself. इसलिए क्वेश्चन आता है बार बार. Oral. Okay. Tetracycline can be used, but how? As a ointment. Okay, ointment. Yes. Now blanket treatment में कौन से antibiotic use होती है? The answer is different. The answer is different. The answer is tetracycline. ठीक है, इसीलिए ये क्वेश्चन आते हैं. इसीलिए you are going to get the same question again and again. Yes, correct. Tetracycline. This is the hint. The answer is spring catarrh. उसी को हम क्या बोलते हैं? What do we call it? VKC. Ventral keratoconjunctivitis. VKC. Yes, right.
सिंपल है, ये याद रखना है तुम्हें. Summer, as soon as you see summer, the answer is spring catarrh, or it is also called as VKC, ventral keratoconjunctivitis. This appearance is called as what? गार्डन में गए हो, you see such stones, right? गार्डन के अंदर ऐसे स्टोन होते बिछे हुए, इसी को बोलते हैं कॉबल स्टोन्स अपीयरेंस, राइट? अब दिख रहा है क्लियर? राइट, ऐसे गार्डन में होते हैं. दिस इज कॉल्ड एज कॉबल स्टोन अपीयरेंस, राइट? क्या बोलेंगे हम इसे? कॉबल स्टोन अपीयरेंस, cobble stone appearance, right? Follicular conjunctivitis can confuse you with cobblestone, but there will be round follicles. Okay, there will be round follicles. Okay, trachoma. Trachoma के अंदर क्या मिल रहा था? What we are seeing on the conjunctiva, we are seeing whitish follicles. Okay, whitish follicles, sabudana, sago grains, right? That can confuse you with cobblestone appearance, right? But follicular conjunctivitis and cobblestone appearance can look similar. So जब क्वेश्चन आए उस पे ध्यान देना जरूरी है. फॉलिकल है तो that will be round, but over here if you can appreciate, this is not round, they are not round in shape. Okay, ट्रैकोमा में क्या मिलता था? सैगो ग्रेन, so whitish follicles will be there. साबुदाना व्हाइट कलर का होता है, राइट? This image can also confuse you. There is deposition. Now what is deposition? There is deposition on limbus. Take a look over here. There is pits, gadde on limbus. Okay, गड्ढे जैसा दिख रहा है इसमें, right? This is called as herbed pits. Now comes, there is deposition. क्या हो रहा है? ऐसा लग रहा है ना ऊपर की तरफ निकला है, right? This is called as, even name sounds similar, Horner's taranta spot. These are spottings. Okay, these are spottings. Okay, and this image is called as shield ulcer. इसको बोलते हैं shield ulcer, and all of this is seen in ventral keratoconjunctivitis. Okay, how you can remember? Which hypersensitivity? Anyone? Yes, it is type 1, right? तो type 1 में क्या होता है? Which immunoglobulin is increased? Yes, IgE. There is increase in immunoglobulin E, right? So what is going to happen? Hypersensitivity 1, right? Right? इसी को हम बोलते हैं इओसिनोफिलिया. एक्चुअली एक तरह की है, दिस इज काइंड ऑफ एलर्जी. ओके, देर इज नो ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व, राइट? एलर्जी में भी यही होता है. आईजी विल इंक्रीज, टाइप 1 hypersensitivity will be seen, and there will be eosinophilia, right? आया समझ में कनेक्शन? What we will see, pseudo geron toxon. What will be the treatment?
we have to stabilize the mast cell stabilizer, right? Reason being यूसिनोफिलिया हो रहा है और आईजी इंक्रीज हो रही है, बॉडी में एलर्जी बढ़ रही है, सो ट्रीटमेंट इज ओलापेटिडिन। कितना? 2%। ओलापेटिडिन 2% ऑइंटमेंट, ठीक है, ये यूज करेंगे हम, करेक्ट। Female patient presented with foreign body sensation for many years. Her shimmer state value is 5 mm. आंसर क्या होगा पहले वो बताओ। ओके, क्या हो रहा है? ड्राई आई, ड्राई आई, इसी को हम बोलते हैं केरेटो कंजंक्टिवाइटिस। सिक्का, सिक्का का मतलब होता है ड्राई, राइट? सो इसी को बोलेंगे हम ड्राई आई। सो व्हाट वी विल गिव इन ड्राई आई? वी विल गिव lubricants. So answer is lubricant. Now tell me, keratoconjunctivitis sicca is associated with which syndrome? ये भी क्वेश्चन में बहुत बार आ चुका है। Yes, dry eye is seen in Sjogren syndrome. क्या क्या मिलता है यहाँ पे? DDR, डॉक्टर्स ड्यूटी रूम, ड्राई आई, dry mouth, right? And rheumatoid arthritis, right? Even dry vagina also can be seen. So remember DDR, and this image is of Schimmer's test. And ऐसे गिनते हैं, we will calculate कितना भीगा है, okay? Yes, rheumatoid arthritis. Your question. Okay, do not look at the image, look at the question. Fibrovascular growth of conjunctiva appears on limbus. Okay, actually it is pterygium. Okay, but what they are saying, it appeared on limbus. Okay, the treatment for pterygium के भी बहुत सारे सब types है. Okay, there are stages of pterygium. If it is not crossing the limbus, if it is not crossing the limbus, the answer is no treatment required. Okay, at this stage we will not treat it. Okay, controversial again, image कुछ अलग दिखा रही है. This was your exam question, but if the question is saying what I am telling you, not cross the limbus, the answer will be no treatment required at this position. Okay, समझ आ गया? ये पूछा जा चुका है, बस ये देखना है. अगर इसने लिखा होता कि क्रॉस द लिम्बस, आंसर विल बी ऑफ कोर्स वी विल डू एक्सीजन प्लस ऑटोग्राफ्ट, राइट? क्राफ्ट करेंगे. दिस इज अवर टेरिजियम, राइट? इसको ही टेरिजियम बोलते हैं.
ये तो सबको आता है, आई नो दिस. Pterygium. Maximum visual disturbance is seen due to astigmatism. Okay, right? Astigmatism. Which ion get deposited over here? Right? Iron. Right? And who stalk other peoples in a bad way? Those who stalk people in a bad way will get Pterygium. The name of that line is Stalker's line. Okay, Stalker's line. Yes. Treatment, of course, excision plus what? Plus autograft. Okay, खुद का ही ग्राफ्ट लेंगे, किसी और का नहीं. That is called as autograft. This is very good question. Very good image actually. टेरिजियम सबको पता है. A nodule surrounded by vessels. What I am saying? A nodule surrounded by vessels. A nodule surrounded by vessels. So many vessels is called as, yes, it is what? No, it is nodule. This one is nodule. इसको nodule बोलेंगे. If it is looking yellowish in color, is called as phylectin. Okay, it is called as phylectin. Okay, grayish or brownish in color. Grayish or brownish in color is called as what? Phylectin तो ऊपर हो गया ना, phylectin उनार. क्या बचा है? Phylectin उनार तो ये है, येलो वाला. This is called as penguicella. पेंगुइसेला सुना है? स्पेलिंग करेक्ट लेना बाद में. पेंगुइसेला इसको बोलते हैं. ओके, नाउ कम्स फ्रॉथिंग. देयर इज फ्रॉथिंग. इज कॉल्ड एज विटामिन ए डिफिशियंसी. क्या बोलते हैं इसी को? दिस इज कॉल्ड एज बाइटॉट स्पॉट. राइट, बिटॉट स्पॉट. समझ आ गया? ग्रेस नोडुल दे रहे हैं तो उसका मतलब बिटॉट स्पॉट नहीं है. मेक इट क्लियर, इट इज पेंगुइसेला. ओके, फ्रॉथिंग मिल रही है, देन इट इज विटामिन ए डिफिशियंसी. राइट, विटामिन ए डिफिशियंसी. ओके, विटामिन ए डिफिशियंसी. ठीक है, और क्या क्या मिलता है? व्हाट डू वी गेट? कॉर्नियल जीरोसिस. ओके, कॉर्नियल जीरोसिस. केराटोमलेशिया, softening of cornea. Okay, softening of cornea. Right, cornea become white is called as corneal scars. These are the features of your vitamin A deficiency. Okay, these are the features of vitamin A deficiency. समझ आया? अलग अलग है सब कुछ. Everything is different. ठीक है. Now tell me, which is the most metabolically active layer of cornea? Anyone? This is endothelium. Because it contains sperm. Okay, it contains, no,
दैट इज एंडोथेलियम है. बेसल इपिथेलियम इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ इपिथेलियल मेम्ब्रेन ऑफ कॉर्निया. ठीक है, वो इनर मोस्ट लेयर है, बट सबसे इनर इन होल द कॉर्निया इज एंडोथेलियम. ओके, राइट. थोड़ा सा पढ़ लेना इसको. चल लेट्स गो अहेड. कॉर्नियल नर्व सप्लाई, एनीवन? कॉर्निया सप्लाइड बाय trigeminal nerve, ophthalmic division, एंड ऑफ्थेल्मिक डिवीजन का भी कौन सा ब्रांच है? यस, इट इज नेजोसिलियरी ब्रांच. द सीक्वेंस इज टॉन. दोज हु प्ले क्रिकेट दे नो, ये लिखा होता है हर बैट पे, राइट? टॉन. Shape of the endothelium of the cornea is hexagonal, right? It look like this, 6 angles, hexagonal shape, right? So, और ये जो इमेज है is called as specular microscopy. क्या बोलेंगे हम इसे? It is given or made by using or seen on specular microscopy. Specular microscopy पे कैसे दिख रहा है? कॉर्नियल इपिथेलियम कैसे दिख रहा है? हेक्सागोनल shape. It is seen as hexagonal shape. ठीक है. Patient presented with sudden painful loss of vision. What I am saying? Sudden painful loss of vision with photophobia. Hint एग्जाम में. With what we have over here? That is hypopyon. That too, it is sterile hypopyon. Answer is going to stay as bacterial corneal ulcer. Okay, क्या बोलेंगे हमसे? बैक्टीरियल कॉर्नियल अल्सर. यही हिंट है इसकी, बस याद रखना, कुछ भी याद ना रहे तो. ठीक है, द आंसर विल बी बैक्टीरियल कॉर्नियल अल्सर, राइट? मोस्ट कॉमन कॉज इज स्टैफ ऑरियस, राइट? बट वो कैसे? वर्ल्ड वाइड. इंडिया में कौन है? दैट इज न्यूमोकोकस. न्यूमोकोकस. ठीक है, याद रखना, ये पेपर में आ चुका है. ऑर्गेनिज्म दैट कैन पेनिट्रेट द इंटैक्ट कॉर्निया. कौन से होते हैं? वन लाइनर है. व्हाट डू थिंक? हेमोफिलस, यस. लिस्टेरिया. और कौन सा होता है? करेक्ट. कॉरिनोबैक्टीरियम डिप्थेरिया. नाइजेरिया गोनोरिया, राइट? नाइजेरिया मेनिंजाइटिस. और बताओ, एक बचा है, एंड दिस इज एक्चुअली difficult to remember also, and you will not think this will can penetrate the intact cornea. That is Shigella. Yes, ये याद रखना जरूरी है ना? सबको लगेगा ये तो डिसेंट्री करवाता है, ये क्या करवाएगा, बट एक्चुअली Shigella can penetrate.
Okay, this is the mnemonic to remember. शिगल याद रखना जरूरी है. Now there is one more question. A farmer was working in the farm and by some vegetative material he got hit on the eye. After some days there is decrease in vision and we can see a satellite lesion. Yes, right, satellite lesions. Hint बहुत बड़ी दे दी. The answer is fungal corneal ulcer. क्या कह दिया था मैंने? The biggest hint is trauma by what? वेजिटेटिव. वेजिटेटिव का मतलब होता है शार्प. सेकंड एंड बाय टेल ऑफ एनिमल. बस ये ढूंढना है क्वेश्चन में. आंसर इज फंगल कॉर्नियल अल्सर. ठीक है, आंसर इज फंगल कॉर्नियल अल्सर. टेक अ लुक ओवर हियर. ऐसे लग रहा है देयर इज वन अ कॉटन वूल, है ना, कॉटन वूल. इट लुक लाइक अ फेदर. इसी को बोलते हैं फेदरी मार्जिन. क्या बोलेंगे हम इसे? feathery margins. feathery margins. There is earth and there is moon. Okay, one earth surrounded by so many moons. This is called as satellite region, right? और क्लियर हो जाएगा. earth surrounded by so many satellites. This is called as satellite lesion and this image has been asked. क्या बोलेंगे हम इसे? सैटेलाइट लीजन. हर बार यही इमेज आए ऐसा हो नहीं सकता. ओके, ये इमेज लोगों ने एग्जाम के बाद दिखाना चालू की. देयर वाज ओनली वन गाय हु वाज शोइंग दिस इमेज वाज टीचिंग यू राइट नाउ. कभी कभी क्रेडिट ले लेना भी चाहिए, है ना. मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ फंगल कॉर्नियल अल्सर. आई विल राइट डाउन द ट्रीटमेंट टिल देन. नहीं पता. हाँ? एस्परजिलस सिस्टेमिक फंगल इन्फेक्शन होता है. आंख में तो सिस्टेमिक है ना, वो सिस्टम इन्वॉल्व कर रहा है. बॉल इज इट इज अ सिस्टम बाय इन हिमसेल्फ आई में, राइट. सो दैट इज एस्परजिलस. क्या है ये? रिंग शेप्ड अल्सर. बाय द वे इसके अंदर पेन होगा इन फंगल कॉर्नियल अल्सर. डू वी सी पेन? तुम्हें कोई फंगल इन्फेक्शन होता है, फॉर एग्जांपल तुम्हारे मुंह में हो रहा होगा कैंडिडियासिस, पेन होता है. ठीक है, देयर आर फंगल इन्फेक्शन happen commonly in groin area. Do we have pain? No, so it is painless. फंगल है, फंगल आराम से ग्रो करती है. नो पेन. ओके, रिंग शेप्ड अल्सर कहां पर मिलेगा? इट इज सीन इन विच ऑर्गेनिज्म? बैक्टीरिया हो गया, फंगल हो गया, क्या बचा है? पैरासाइट्स, राइट. अकेंथोमोएबा. अकेंथोमोएबा माइक्रो का क्वेश्चन पूछ लेता हूँ.
Diagnosed by what? Non-nutrient agar with E. coli. Okay, this is the diagnostic method, right? Treatment क्या देते हैं? पॉलीहेक्सामिथिल बाइगोनाइड, PHMB बोलते हैं इसको, राइट? PHMB. नाउ एक क्वेश्चन आता है, मोस्ट कॉमन अल्सर सीन इन कॉन्टैक्ट लेंस यूजर. Second question, most specific ulcer seen in contact lens user. यही तो कयामत है. The answer over here is Pseudomonas, right? But most specific answer ulcer is seen is acanthomoeba. Acanthomoeba. ठीक है, one word answer is changed. ठीक है, ये तो सबको आता है. This is called as, what has happened over here? A nerve dendrite. नर्व देखिए होंगे, उसके एंड पे ऐसा ऐसा होता है. A nerve dendrite is involved, is called as dendritic ulcer. Dendritic ulcer seen in which disease? Herpes zoster or herpes simplex, or just herpes? Remember, it is herpes simplex, HSV. Okay, treatment 3% acyclovir. 3% acyclovir, right? acyclovir देंगे. Okay, नॉर्मल आई पे ये दिखेगा ना, व्हेन वी विल पुट मिथिलिन ब्लू डाई इन द आई, एंड ऑन ऑप्थेल्मोस्कोपी वी विल सी ग्रीनिश डेंड्राइट्स. ओके, नॉर्मल आई में दिखेगा नहीं, बट सो मेनी ऑफ द डॉक्टर्स यूज स्टेरॉइड्स इरेशनली. उसको कैसे भी यूज करते हैं, राइट? स्पेशली क्वैक्स. So if you are going to give steroids in dendritic ulcer, what I'm saying, if you are going to give steroids in dendritic ulcer, patient will now land in earth, गोल होती है, and there is geographical area, America, Asia, Europe, right? So earth with geographical area, और ये नीला नीला पानी है, this is called as sea. इसी को हम बोलते हैं geographic ulcer. कब होता है? When we give steroids in which ulcer? In dendritic ulcer, right? Patients in below in image likely to develop which kind of complication? This is called as caused by which virus? Herpes simplex or herpes zoster? Yes, remember, this is herpes zoster virus infection. herpes simplex dendritic ulcer करवा रहा है, confusion यही हो जाता है. herpes zoster is going to cause which type of keratitis? The name of that keratitis is nummular keratitis. ठीक है, nummular. zoster and simplex, one word changed, right? It is nummular. इसी को हम बोलते हैं, right? Infection going till the tip of the nose is called as herpes zoster ophthalmicus.
Okay, herpes zoster ophthalmicus. What is happening? It is going to involve the nasociliary nerve as well, ton, trigeminal, ophthalmic division, and nasociliary nerve, right? So what will be the treatment over here? वहां हम 3% ए साइक्लोविर दे रहे थे एज अ ऑइंटमेंट, बट नाउ व्हाट वी विल गिव ए साइक्लोविर 800 mg dose फॉर हाउ मच? ये सिस्टेमिक ओरल वही होता है दोनों का मतलब. फॉर हाउ मेनी डेज? यस, 800 mg 5 times a day for how many days? That is 10 to 14 days. अगर याद रखना है एटलीस्ट रिमेंबर 14. ओके, 10 to 14 days, 14 days याद रख लो. मैक्सिमम देंगे हम, मिनिमम नहीं यहाँ पर. ओके, वरना आंख तो जाएंगी और सब चीजें भी जाने के चांसेस हो जाते हैं. दिस इज herpes zoster virus. And which kind of opacity seen in cornea? It look like a coin. गोल दिख रहा है. It look like a coin shaped, so it is called as coin shaped opacity. This is called as coin shaped opacity. ठीक है. Most common nerve involving herpes zoster infection. Most common nerve involving herpes zoster ophthalmicus. अलग अलग है आंसर इसके. बस ऑप्थेल्मिकस में कौन सी होती है? ऑप्थेल्मिकस, yes it is ton, trigeminal nerve, ophthalmic division, nasociliary nerve branch. But most common nerve involved in herpes zoster infection. What do you think? Yes, frontal nerve. It is frontal nerve. ठीक है. आता है सबको ये? The eyeball has become like a cone. कोन जैसा दिख रहा है, आइसक्रीम का कोन है ना. दिस इज कॉल्ड एज केराटोकोनस. क्या बोलेंगे इसको? केराटोकोनस. साइन का नाम क्या है? चांद का बेटा. द नेम ऑफ दिस साइन इज चांद का बेटा, मून सन. मून सन साइन. ओके, ये सबको पता है, बट देर इज वन मोर नेम. ओके, if we are going to put a torch from the side lateral, from the lateral canthus side, okay, if we are going to put a torch from the lateral canthus side on the middle side, nose के पास, on the, okay, on the middle side near the nose, what you will see? You will see a arrowhead. Arrowhead दिख रहा है. Arrowhead, what we are seeing? Arrowhead is called as a Rizuti sign. This is called as a Rizuti sign. ठीक है. ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट क्या है? C3R सुना होगा. C3R. ठीक है, that is the treatment. Now they have to state this question: which vitamin we required to treat keratoconus? नाम में है लेकिन समझ में नहीं आ रहा है ना, हमें भी ऐसे लिखवाया गया.
Okay, collagen cross linkage happen by using riboflavin. The R stand for riboflavin, and it has been asked, right? If you will do ophthalmoscopy or माइक्रोस्कोप पे देखेंगे उसे, स्लिट लैम्प पे देखेंगे, so what we will see vertical stria, whitish stria दिख रहे हैं, right? The name of that stria is called as vagged stria. उसी को बोलते हैं vagged stria. How you will remember? V stand for vertical. Vertical stria is seen in vagged stria, seen in keratoconus, sorry. ठीक है, और एक आएगा उसका भी निमोनिक है. Just remember vertical stripes on slit lamp, box stria. This is your recent question. First answer क्या है? What is the meaning of colorate or colorate or collarate? That means base, right? These are iris, ठीक है, iris के ये नोड्यूल है. These are iris nodule, iris के ऊपर बैठे हुए नोड्यूल्स है. कोलरेट का मतलब होता है बेस. Okay, colorate means base. Okay, so at the base of iris, which nodule are seen? The name is Busaka. Okay, Busaka nodule, right? These are Busaka nodule seen at base of iris. Seen at base of iris. ठीक है. Then comes nodules at the pupillary margin. Nodules at the pupillary margin. क्या नाम है इसका? Yes, कोएपे. कोएपे nodule seen at pupillary margins. Okay, कोएपे. ठीक है, और एक है, खत्म नहीं हुआ यहाँ पर. छोटे से है, राइट? ऐसी में जागे तो तुम खत्म. Okay, nodules at the, this is zoom in image. Okay, nodules at the angle of iris. सबने पढ़ा है बट nodules ऐसे दिखते हैं. Nodules at the angle of iris is called as Berlin nodule. Okay, nodules at the base angle of iris is called as Berlin nodule, right? कैसे याद रखना है? जो सब लड़कों को चाहिए बट मिलता नहीं है. Okay, there is a cricketer by the name Kevin Peterson. और बाबू, जो भी याद रखना है, केपी, केविन पीटरसन, बीए, है ना? Okay, these are the mnemonics to remember. Use wisely. Do not use in public. Snow banking is seen in, what do you think? इसी को बोलते हैं स्नो बैंकिंग. इट लुक लाइक देयर इज स्नो. स्नो एक जगह जमा हो गया, उसी को बैंक बोलते हैं, जमा होना. स्नो बैंकिंग इज सीन इन पार्स प्लैनेटिस. वन लाइनर से यार, ये तो आनी चाहिए. ठीक है, वन लाइनर से. This is snow banking, and it looks like someone has took candles and he's putting wax on whole of the eye, है ना?
लाइट भी दिख रहा है पीछे पीले कलर का, राइट. दिस इज कॉल्ड एज कैंडल वैक्स ड्रिपिंग. ड्रिपिंग मतलब गिराना होता है. दिस इज कॉल्ड एज कैंडल वैक्स ड्रिपिंग सीन इन सार्कोइडोसिस, राइट. सार्कोइडोसिस, सार्कोइडोसिस, ठीक है. अभी ठंड आ रही है, राइट, है ना. कोहरा, फॉग, इसी को बोलते हैं. इफ यू ड्राइव अ कार in a fog, how it will look? It will look like there are only headlights which are moving in the fog. इसी को बोलते हैं कोहरे में गाड़ी चलाना. हेडलाइट इन fog appearance seen in, किसमें मिलेगा? yes, most common causes toxoplasmosis. Toxoplasmosis. Toxoplasmosis is not in the option, then second will be TB. ठीक है, second will be TB. क्या बोलते हैं इसको? It look like there are bands. Look like there are bands present. इसी को बोलते हैं बैंड केराटोपैथी, राइट. बैंड केराटोपैथी. Which ion is deposited? व्हाइटिश है. सो कैल्शियम, बोन में कैल्शियम होता है, राइट. व्हाइटिश होना चाहिए. सो इट लुक व्हाइटिश बैंड. सो बैंड केराटोपैथी seen in sarcoidosis. Answer is calcium. First one and second one. See, there are two diseases which look similar: external hordeolum and internal hordeolum. नाम भूल जाते हैं हम, ठीक है, थोड़ी देर के लिए नाम भूल जाएंगे. स्टाई एंड इंटरनल hordeum. ओके, कैलोजियन डिफरेंट है, ठीक है. कैलोजियन इज डिफरेंट. फर्स्ट अंडरस्टैंड दिस. एक्सटर्नल hordeolum and internal hordeolum. एक्सटर्नल मीन्स आउटसाइड. आउटसाइड वाली पिंपल एक्सटर्नल hordeolum. inside वाली pimple is called as internal hordeolum. अब now suppose there is a pimple on my eyelid. क्या बोल रहा हूं मैं? pimple on my eyelid. pimple जब पकेंगी, so what I will see? I will see redness, right. redness दिखेंगी. pimple आ गई है, redness दिखेंगी. and there will be yellowish marking, right. पकने के बाद कैसा दिखता है? इट लुक्स येलो, थोड़ा सा टिप येलो हो जाता है. देन ओनली हम पिंपल को फोड़ते हैं, राइट. एक्ने जो आते हैं हमारे फेस पे. तो सेम थिंग विल बी सीन ऑन आईलिड इन एक्सटर्नल hordeolum. बात समझ आ गई? सेम पिंपल जो हमारे फेस पे होते हैं, द सेम पिंपल विल बी सीन ऑन एक्सटर्नल hordeolum, और इसी को हम बोलते हैं स्टाई. क्या बोलेंगे हमसे? इसी को हम बोलेंगे स्टाई. सेम पिंपल दिखेंगे, राइट. बट अब समझ लो, पिंपल रिवर्स्ड है. पिंपल रिवर्स्ड है, राइट. कहां पर है? रिवर्स्ड है. उसका मतलब है उल्टी हो गई, अंदर है. ऊपर से थी तो येलोइश दिख रहा था, हेड भी दिख रहा था, राइट, येलो कलर का. बट नाउ इट इज इंटरनल. अंदर से पिंपल आ गई मेरे आईलिड में. मुझे वो हेड दिखेगा येलोइश कलर का? नहीं, राइट. व्हाट आई विल सी? ओनली द स्वेलिंग ऑफ दैट पिंपल. स्वेलिंग दिखेंगी रेडनेस के साथ. रीजन, जहां से उसको पस को निकालना है, उसका हेड कहाँ है? अंदर छुपा हुआ है.
सो वी विल नॉट सी अ येलोइश, यहाँ पे जैसे दिख रहा है यहाँ पे टिप, ठीक है, वैसा टिप यहाँ पे नहीं मिलेगा. आई विल सी ओनली रेडनेस विद अ पिंपल. इसी को वी विल कॉल इट एज इंटरनल होडियोलम. क्या बोलेंगे हमसे? इंटरनल होडियोलम. बात समझ आ गई? व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से, राइट? सेकंड थिंग, image, if image come at all, it will be along the margins. ये मार्जिन पर है, ओके, इट विल बी along the margins. आईलिड जहां पे अपनी स्टार्ट हो रही है, आईलैशेस उसके मार्जिन पे होगा एक्सटर्नल होडियोलम. बट दिस इज नॉट ऑन द मार्जिन, it will be away from the margins. ठीक है, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ द इमेजेस. ठीक है, समझ आया? ठीक है, समझ आया? यस, नो, इल्ले और बीच वाले? यस, समझ आ गया ना? यस, दैट इज व्हाट आई वांट. नाउ टेल मी, स्टा इज अ इन्फेक्शन ऑफ विच ग्लैंड? रिमेंबर, if single best answer, the answer is GS. If GS is not in the option, then we will go for mebonium. Okay, then we will go for mebonium. ठीक है, इंटरनल होडियोलम किसका है? इट इज ओनली ऑफ मेबोनियम. ओके, मेबोनियम. ठीक है, आ गया समझ में? नाउ वी कम टू कैलाजियन. कैलाजियन, कैलाजियन का डेफिनेशन क्या है? इट इज नॉट द इन्फेक्शन ऑफ ग्लैंड. फर्स्ट ये क्लियर करो, इसीलिए गलत होता है. ओके, कैलाजियन बोलो या कालाजियन बोलो, राइट? इट इज अ टार्सल सिस्ट. सिस्ट है, क्या है? सिस्ट. टार्सल कंजंक्टिवा होता है विच इज प्रेजेंट ऑन आवर आईलिड्स, अंदर के साइड से, है ना? अभी पढ़ रहे थे हम अपर टार्सल कंजंक्टिवा, राइट? सेम, दैट टार्सल पार्ट ऑफ eyelid will have cyst. इसमें ऐसी आउटपॉचिंग, सिंगल गोल राउंडेड आउटपॉचिंग नहीं होंगी, okay? इसमें बड़ी होंगी. रीजन है, ये सिस्ट है. सिस्ट रेगुलर मार्जिन में नहीं फैलता, राइट? दे आर नॉट गोइंग टू टेक अ राउंड शेप. ये क्लियर कर लो पहले. ये सिस्ट है, इरेगुलर शेप फैलेगा जितना उसको फैलने के लिए मिल रही जगह, राइट? तो सेम थिंग इज गोइंग टू हैपन. So, what will be the treatment of sty और hordeolum as a whole? यहाँ क्या देंगे हम? एंटीबायोटिक देंगे, राइट? एंटीबायोटिक देके उसको सुखाएंगे, है ना? जख्म को सुखाना बोलते हैं. बट ओवर हियर व्हाट डू वी हैव? We have something called cyst, and if you have studied cyst in surgery, what is the treatment of that cyst? cyst की ट्रीटमेंट क्या होती है? सर्जरी में पढ़ा है तुमने. ट्रीटमेंट इज ऑलवेज इंसिजन एंड ड्रेनेज, राइट? इसका पकने का वेट नहीं करते क्योंकि वो सिस्ट है, वो ऑलरेडी पका हुआ है. ठीक है, सो ट्रीटमेंट इज इंसिजन एंड ड्रेनिंग, राइट? नाउ इसको ड्रेन करने के लिए भी काम कुछ था नहीं लोगों के पास. दे हैव मेड अ स्पेशल क्लैंप, एंड दिस क्लैंप हैज बीन आस्क्ड इन योर एग्जाम. द नेम ऑफ दैट क्लैंप इज कैलाजियन क्लैंप. रीजन, टू कैच आईलिड प्रॉपरली. एक इधर से जाएगा और एक सिस्ट के ऊपर होगा. इवन यहाँ पर भी क्वेश्चंस फिनिश नहीं होते. दे विल आस्क व्हिच इंसिजन इज गिवन व्हाइल डूइंग इंसिजन एंड ड्रेनेज इन कैलाजियन. इंसिजन देते हैं, उसका नाम है वर्टिकल इंसिजन. ओके, अभी हाथ दिख नहीं रहा लेकिन स्टिल टेक अ लुक. बस ऐसे आ रहा है बाहर. सो दिस इज वर्टिकल इंसिजन. स्ट्रेट इंसिजन मार रहा है. ऐसा होता तो हॉरिजॉन्टल होता. ठीक है, इंसिजन इज वर्टिकल इंसिजन.
ठीक है, ये भी पूछा गया है। Now then we come to carcinoma of lead cancer. Most common lead cancer कौन सा है? What do you think? The most common lead cancer is not squamous cell carcinoma. हम हर जगह squamous cell मार रहे होते, but remember it is basal cell carcinoma. Okay, basal cell carcinoma. Least common कौन सा है? sebaceous cell carcinoma. ठीक है, इसको एक बार पढ़ रहे हैं ना, थोड़े से वन लाइनर्स है. Now do you want me to continue, because I will need